Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Vedant Agarwal. Our lead story, well, the crucial floor test in Jharkhand on Monday, and MLAs have returned from Ranchi. In fact, they will stay put in the circuit house there in Ranchi for the entire night. They will go straight for the floor test to the State Assembly. The JMM-Congress alliance really leaving nothing to chance. It's going to be a day of hectic political drama because some rebel MLAs are already speaking out against the ruling alliance there. Can the BJP bowl a googly? Is there a surprise in store? Because the JMM Congress alliance does seem to have the numbers, but there could be surprises, of course, given the fact that it's going to be a close race there in the floor test on Monday. My colleague Tanishq Punjabi is on ground. He also spoke to one of the MLAs who returned from Hyderabad. Listen. सर किसी तरह का आप तो कोई डर नहीं है ना? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सब गठबंधन के सारे एमएलए एक साथ हैं और 48 विधायक वोट देंगे. Right now outside Circuit House here in Ranchi, and the RRR continues here in Jharkhand. From resort to Ranchi to Rajniti continues here in Jharkhand as Champai Soren, the newly sworn in Chief Minister of Jharkhand, is to face the floor test tomorrow. The magic mark being 41. The MLAs have returned from Hyderabad today, and some of them claim that they have the majority of 48 MLAs. The opposition bloc or the BJP has announced whip and has asked all the MLAs to be present there for the floor test tomorrow. Well, it looks like a clean sailing for Champai Soren in the floor test, but there could be some surprises as well. The MLAs were flown to Hyderabad as there were fears of horse trading after Champai Soren took oath as the Chief Minister. Now they have been flown back, and now they are staying in this circuit house beside me, and from here they will go for the floor test tomorrow at 11 a.m. What remains to be seen, whether it will be a clean sail for Champai Soren or there will be some surprises in the box. With camera person Virendra Kumar Seni, Tanishq Punjabi for NDTV. So, well, the BJP has issued a whip. It's going to be a hectic day tomorrow in Jharkhand. But moving now to the other big headline. Well, Uttrakhand is moving fast on the Uniform Civil Code. In fact, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has cleared, in fact, the cabinet has cleared the UCC draft after much delay. And the government is all set to introduce the UCC draft that has been cleared by the cabinet in the assembly as well on the 6th of February. So, of course, Uttarakhand is likely to get UCC soon, and states like Assam and Gujarat are expected to follow as well. My colleague Kishore Rawat has more details. बिल्कुल अब रास्ता साफ है. यूसीसी का ड्राफ्ट जो मुख्यमंत्री धामी के पास कमेटी ने सौंपा था, उसके बाद इसे कैबिनेट में लाकर कैबिनेट मंत्रियों के सामने लाया गया, इसके समझाया गया और उसको मंजूरी दी गई. उसके बाद अभी 6 फरवरी को टेबल किया जाएगा एक विधेयक के रूप में, और 7 तारीख को इस पे जाहिर सी बात है चर्चा होगी, और फिर हो सकता है कि 7 तारीख शाम या सुबह 8 तारीख को इसको बिल को पास कर दिया जाएगा. बीजेपी के लिए यहाँ पास कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. बीजेपी के पास अपने 47 एमएलए है और उसके अलावा 2 जो निर्दलीय है उनका भी समर्थन है. अब ऐसे में बीजेपी इसको चर्चा जरूर कराएगी, और कांग्रेस हालांकि इसको विरोध कर रही है. हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध के चलते बीजेपी इसको जल्दी से ही पास करा दे. कुल मिलाकर जो यूसीसी का जो बिल था, यानी यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, 18 महीने लगातार इसको तैयार किया गया कमेटी ने, और इसमें बहुत सारे मामले हैं जो महिलाओं पर केंद्रित है, यानी पूरा बिल महिलाओं पर केंद्रित है. और जो यूसीसी की ड्राफ्ट की जो कॉपी दी गई थी, इसमें 4 सेक्शन है और 780 पेजेस है. सभी के आगे जो न्याय की देवी है उसके आगे आंखों में पट्टी नहीं है, तराजू है. यानी जो समान नागरिक संहिता जिसका शब्द है, उसी तरह से सभी के लिए एक तरह से ही कानून होगा, और इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा. खास बात यह है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसमें बेटों की तरह बेटियों को भी समान अधिकार मिलेगा. शादी की उम्र 21 साल कर दी गई है, लेकिन सभी धर्मों को 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कराएगा, ये साफ कहा गया है. बहुविवाह पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा तलाक मामले में पति पत्नी को दोनों समान अधिकार दिए जाएंगे. अक्सर पहले ही होता था कि जो हस्बैंड है उसकी ज्यादा सुनी जाती थी, कई मामले ऐसे सामने आते थे कई धर्मों में, लेकिन अब पत्नी को भी उसी तरह से न्याय दिया जाएगा. तो कुल मिलाकर ये बिल अब 6 तारीख को जब ये टेबल होगा और उसके सार्वजनिक हो जाएगा, तब देखना होगा कि इसमें किस तरीके के और कानून है. हालांकि जो चीजें सामने आ रही है उसमें पहले जो सेक्शन है उसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट है. उसमें जो कानून है, जो लोगों से बात की है, जो हर स्टेक होल्डर से बात की है, हर धर्म
तमाम जाति के लोगों से बात की है, वर्ग से बात की गई है। उसके बारे में अब देखना होगा कि उस कानून में जो यूसीसी का बिल विधेयक के रूप में आएगा, कानून बनेगा, उसमें आखिर रह गया है। So all eyes on the Assembly session on February the 6th. Meanwhile, the Parliament will reconvene on Monday for the budget session, and it's going to be a big day because the Prime Minister will be addressing the House as well. He'll be replying to the presidential address debate, and this is going to be an election speech because the Prime Minister will set the tone for 2024 and will also outline the roadmap for MPs. In fact, BJP MPs have been asked to stay for the entire duration of the Prime Minister's speech in Parliament on Monday. Meanwhile, PM Modi inaugurated and laid foundation stones of projects worth over 10,000 crore rupees in Assam. In fact, the Prime Minister launching, in a sense, the BJP's Northeast campaign. The projects, of course, also include the Kamakhya Temple corridor, which has been built at a staggering cost of over 500 crore rupees. In fact, the Prime Minister held a grand roadshow in Guwahati as well. A roadshow in Guwahati by Prime Minister Narendra Modi before a rally at Khanapara field that saw a massive turnout as Prime Minister rolled out projects worth over 11,000 crores for Assam. PM Modi's infrastructure blitz in Assam, inauguration and foundation stone of projects worth 11,600 crores. Foundation stone laying of Ma Kamakhya Access Corridor. Kamakhya Corridor to provide all-weather access, world-class amenities to pilgrims at cost of 498 crores. 3,250 crores for facelift of Guwahati Medical College, 297 crores Unity Mall to showcase products of all states, 3,444 crores for upgradation of 43 roads, 358 crores for widening of roads to LJB International Airport at Guwahati, 832 crores for upgradation of Nehru Stadium to FIFA Standard Football Stadium. 5,000 Lakhpati Didis attended PM Modi's mega rally. अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। And then came the big Lok Sabha reach out to the nation. आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। Amid a massive turnout of people here in Guwahati, Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid foundation of project more than 11,000 crores for Assam ahead of the crucial Lok Sabha elections which are going to be held in a few months. In fact, Prime Minister also spoke about how the Kamakhya corridor will bring in new scope of tourism. He assured that Modi guarantee means all the promises that he's making to the people are going to be fulfilled. He spoke about how the government through the new interim budget is trying to promote rooftop solar panels to reduce electricity cost. जब आप आके असम में बोला था जब बीजेपी आएगा तो विदेशी जाएगा, वो अभी तो क्या हुआ? आपने बोला था जो सहाय श्रमिक का जो डेली वेजेस है, मजदूरी है,
वो आपने अच्छी तरफ से कर देगा, वो आज तक नहीं हो पाया। आपने फ्लड फ्री आसाम के बारे में बोला था, इरोशन फ्री आसाम बोला था, करप्शन फ्री आसाम बोला था, आपने बोला था जो आसाम एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा। Only last month, Congress leader Rahul Gandhi launched his Bharat Jodo Nyaya Yatra from violence-ridden Manipur, travelled through Nagaland, touched Arunachal and Meghalaya, and in Assam the yatra was marred by controversy and even cases against Rahul Gandhi and other Congress leaders for permission violation. Rahul's yatra was first followed by a visit by Home Minister Amit Shah to Assam and now Prime Minister Modi, signalling how crucial 25 Lok Sabha seats in Northeast are this time. With Nakul Rabha and Sanjay Chakravarti in Guwahati, Ratndeep Chaudhary for NDTV. Meanwhile, in other news, Arvind Kejriwal seems to be entirely cornered amid agency heat. Well, a Delhi police team served a notice to Arvind Kejriwal and his senior-most minister Atishi over the Aam Aadmi Party's poaching allegations against the BJP. Well, this, as a fresh war of words, has also broken out between the Lieutenant Governor, Arvind Kejriwal's arch nemesis, and the Delhi Chief Minister. Take a look at this report. Delhi police doorstepping the capital's chief minister. Their third such ambush in less than 72 hours. After multiple failed attempts, the Delhi police finally handed over a notice to Arvind Kejriwal and his senior-most lieutenant Atishi, asking for proof for her bombshell allegation on the BJP. भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। खुद से जीतने की जिद है। But Atishi's boss is not just dodging the Delhi police but the ED in the liquor policy case. With 5 summons successfully evaded, the ED now tightening its nose. The ED has moved to a Delhi court against Arvind Kejriwal, saying he is bound to appear for questioning as a public servant. With agencies closing in on the Aam Aadmi Party boss, Arvind Kejriwal continues to cry political vendetta. आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में, नहीं आते बीजेपी में। वो कोई भी दोषारोपण कर देते हैं, वो पहले भी एक बहुत संगीन आरोप लगा के चले जाते बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्यों के। 2018 में मार्च में उनको माफी मांगनी पड़ी थी नितिन गडकरी जी से और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी से भी। The Delhi LG jumped on the bandwagon to corner the Delhi Chief Minister on what he called the deteriorating health infrastructure. Citing High Court remarks, the LG hit out at Arvind Kejriwal for bad state of hospitals and the unavailability of basic services like beds and ventilators. Kejriwal, in a retaliatory letter, blamed Delhi's top officials under the LG for insubordination, involving the long-standing conflict between the Delhi government and the centre over bureaucrats. With a big dent on his Qattar Imandar image, the big question: can Arvind Kejriwal, now on the campaign road, wriggle out of charges and controversies in the middle of the biggest election year? Bureau Report, NDTV. News from Maharashtra. Well, Chief Minister Eknath Shinde's troubles have increased after the big revelation that Food and Supplies Minister Chhagan Bhujbal has resigned from the post of a minister in Eknath Shinde's cabinet. The opposition is calling Chhagan Bhujbal's decision a political gimmick. But Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, has said that the question of accepting Bhujbal's resignation does not arise. Here's a report. भुजबळाच्या कमरेत लाद घालून मंत्रिमंडळाच्या बाहेर हाकला, मला त्या सगळ्यांना विरोधी पक्षामध्ये, स्वपक्षामध्ये, स्वसरकारमधील सगळ्यांना मला सांगायचं, 17 नोव्हेंबरला त्या ओबीसी एल्गारची The issue of Maratha reservation in Maharashtra refuses to cool down. While Chief Minister Eknath Shinde may have thought that agreeing to Manoj Jarange Patil's demands would put the issue to rest, there's a fresh headache for him. The announcement of the resignation by senior NCP leader Chhagan Bhujbal from the Shinde government, in which he is the Food and Supplies Minister.
While addressing the OBC conference in Ahmednagar, Bhujbal openly spoke against the government's decision to give backdoor backward class reservation to Marathas. 17 नोव्हेंबरला ह्या ओबीसी एल्गारची पहिली रॅली झाली अंबडला, बरोबर. 17 नोव्हेंबर पहिली रॅली अंबडला झाली आणि ऐका 16 नोव्हेंबरला मी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. The opposition is calling it a well thought out strategy of the government. छगन भुजबल जी जो बात आजकल बोल रहे हैं, उनके मुंह से जो बातें निकल रही है, फडणवीस जी उनके मुंह से बोल रहे हैं. कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं. मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त करना चाहिए. Is there any truth to the opposition's allegation? If Bhujbal submitted his resignation 3 months ago, why did he reveal it now? Chief Minister Eknath Shinde is in a difficult spot. He is trying to build base among the Maratha voters, but if he accepts Bhujbal's resignation, then it will send a wrong political message of the Maratha CM removing the OBC leader as a minister. Meanwhile, BJP has come out in support. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the CM has not accepted the resignation of Chhagan Bhujbal. या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगू शकतील, पण आज तरी मी एवढं सांगू शकतो की भुजबळ साहेबांचा कुठलाही राजीनामा आम्ही स्वीकारलेला नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारलेला नाही. देखिए, भाजपा ये सदैव ओबीसी के पक्ष में खड़े रहने वाला पक्ष है. हम तो यही कहेंगे कि भाजपा का अगर कोई डीएनए है तो वो ओबीसी है. Around 38% of the total population of Maharashtra is OBC. The OBC community is not ready to share its 27% reservation quota in the state with the Maratha community. Their demand is that Marathas need to be given separate reservation. While it remains to be seen whether Shinde will be able to withstand the increasing pressure from the OBC community and the ministers of his own government. With Ronak Kokre in Mumbai, Bureau Report, NDTV.